Hi kids, welcome to your English class and I'm your teacher and mentor Ananya and I'm back with a new lesson of your English book that is Literary Journeys for Class 4 by Brainwood Publication. Children, so far we have completed 3 chapters of your book. Alright, and now we are going to start with lesson number 5, that is an informal way, right? So, this is a beautiful poetry. We have done chapter number 1, that was a poetry, and today we are again going to discuss a beautiful poetry where we are going to talk about letters. Alright? See children, whenever we need to communicate, हमें जब भी एक दूसरे से बात करनी होती है तो या तो हम बोल के समझाते हैं या इशारों के थ्रू या लिख कर, और जो लोग हमसे दूर होते हैं हम उन्हें चिट्ठियां लिखते हैं, right? So today we are going to study a beautiful poem about the informal letters. So let's get started. Think, how do you keep in touch with your family and friends? आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से बातचीत करते हैं? यहाँ पर जो लोग हमारे साथ रहते हैं हमारे घर में, उनके साथ तो हम नॉर्मली घर बैठ के ही बात कर लेते हैं आमने सामने, पर जो फ्रेंड्स या जो फैमिली मेंबर्स हमसे दूर रहते हैं किसी वजह से, जैसे कोई काम करने के लिए बाहर है, कोई पढ़ने के लिए कहीं बाहर गया है, तो उससे हम कैसे टच में रहते हैं? डू यू राइट लेटर्स, ईमेल और स्पीक ऑन टेलीफोन? हम सभी ये करते हैं, राइट? राइट एनी टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यू यूज. Now let us read this beautiful poem in which a child is writing letter to her mother expressing her emotions. So you have to first of all discuss in your class and then write two means of communications. कोई भी दो तरीके लिखिए जिससे आप अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहते हैं. और अब चलिए पढ़ते हैं ये कविता जिसमें एक छोटी सी लड़की अपनी मामा को चिट्ठियां लिख रही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल पोएट्री. आई एम राइटिंग अ लेटर टू सेंड बाय पोस्ट. अब ये जो गर्ल है ये क्या बोलती है कि मैं क्या लिख रही हूँ, मैं चिट्ठी लिख रही हूँ और इसे मैं पोस्ट के थ्रू भेजूंगी. इट्स टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट. और ये लेटर मैं किसे लिख रही हूँ? ये मैं उस व्यक्ति को लिख रही हूँ जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा चिंतित रहती हूँ और जिसका मैं सबसे ज्यादा केयर करती हूँ, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ. आई राइट द डेट क्लियरली एंड पुट द एड्रेस. सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ? मैं डेट डालती हूँ और फिर साफ हैंड राइटिंग में एड्रेस डालती हूँ. देन बिगिन डियरेस्ट मम्मी, डिड एनीवन गेस? सो उसके बाद मैं क्या लिखती हूँ? मैं लिखती हूँ डियरेस्ट मम्मी. तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि किसको चिट्ठी जा रही है? हाँ, मैं अपनी मम्मा को चिट्ठी लिख रही हूँ. माई पेन ट्रेवल स्लोली ऑल डाउन लॉन्ग द शीट. मेरा जो पेन है वो धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और ट्रैवल करते हुए पूरी शीट को कवर कर लेता है. बिकॉज आई एम सो एंशियस टू कीप इट ऑल नीट. क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ कि मैं हर एक शब्द जो है बहुत सुंदर और अच्छी तरह से लिखूं ताकि जब चिट्ठी मम्मा तक पहुंचे वो हर एक शब्द को पढ़ के समझ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. I carefully blotted to dry up the ink. Such nice blotting paper, the color is pink. और इंक पेन से लिखने के बाद मैं उस चिट्ठी के ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रखती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा इंक है वो सोख हो जाए. जो ब्लॉटिंग पेपर का कलर है वो भी बहुत सुंदर है, वो है पिंक कलर का. Alright? I turn the page over and on goes my pen. It lastly come kisses, there's just room for 10. उसके बाद मैं पेज को टर्न करती हूँ और फिर से लिखना शुरू करती हूँ और फाइनली जब चिट्ठी एंड होने वाली है तो सिर्फ अब कुछ ही शब्द यानी 10 शब्द ही लिख सकते हैं. The envelope is ready. I put the stamp on and run to the post box and now it's gone. Envelope तैयार है, उसके अंदर मैं चिट्ठी को फोल्ड करके डालती हूँ और फिर उसे सील करके स्टैम्प लगाती हूँ. And then I take it to the post box and when I put it in the post box, वहाँ से पोस्ट मास्टर उसको लेके चला जाता है. And now the letter starts the journey from me to my mother. है ना beautiful poetry which tells how to write an informal letter. कविता के थ्रू
जो पोएट है उसने पूरा इनफॉर्मल लेटर का सीक्वेंस हमें अच्छे से समझा दिया है। सबसे पहले डेट, फिर एड्रेस, फिर डियर करके सैल्यूटेशन, डियर मम्मी, डियर पापा, जिसको भी। यहाँ तो जो ऑथर है, जो पोएट है, वो बेसिकली अपनी मदर को चिट्ठी लिख रही थी, इसलिए उन्होंने डियरेस्ट मम्मी लिखा था। जब हम किसी और को लिखेंगे तो डियरेस्ट पापा, डियरेस्ट ब्रदर, डियरेस्ट सिस्टर, राइट। उसके बाद अपना पूरा लेटर, उसके बाद एंड नोट फ्रॉम योर लविंग डॉटर या सन, एंड देन उसको प्रॉपरली अंदर फोल्ड करके एनवेलप में डाल के सील करके स्टैम्प लगा के पोस्ट कर देना है। दिस इज द वे हाउ टू राइट एंड पोस्ट अ letter. In this beautiful poetry, we came across certain important words. Anxious means keen, dearest means most loved, travels means moves, neat means tidy and organized, blotting means absorbing excess liquid. Okay? Envelope means the cover of a letter जिसके अंदर हम चिट्ठी डाल के भेजते हैं. Stamp means a postage seal, ठीक है, जिससे easily हम जो है भेज सके. Lastly means the final part, and post box means a red color mail box जिसमें हम चिट्ठियां या important postal mails को डाल देते हैं. All right. Now let's do the exercises. First of all, we have MCQs. So let's do them quickly. The big girl was writing a letter. वो क्या लिख रही थी? वो चिट्ठी लिख रही थी. She was writing a letter. The pen travels lightly, boldly, slowly, none. The pen travels slowly. Third, the girl carefully blotted to dash the ink, to dry up the ink, ताकि ink जो है वो overflow ना करे और अच्छे से सूख जाए. Fourth, the color of blotting paper is red, pink, blue, green. It is pink color. Blotting paper का color कैसा है? Pink. ठीक है? The girl drops the letter in the post box. चिट्ठी लिखने के बाद, चिट्ठी को एनवेलप में डालने के बाद स्टैम्प लगा के वो पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप कर देती है. नाउ लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन. नेक्स्ट वी हैव fill in the blanks. So let's do it quickly. So the girl writes the clearly at the top of the letter. The girl writes the date. Okay, this is a help box, so you can take the help. So date. सबसे ऊपर वो डेट लिखती है. द पेन डैश स्लोली द पेज, द पेन ट्रेवल्स. नेक्स्ट थर्ड, द गर्ल यूजेस डैश पेपर टू ड्राई द इंक, ब्लॉटिंग पेपर. ओके, ब्लॉटिंग पेपर. फोर्थ, द लेटर इज प्लेस्ड इन अ एनवेलप. फिफ्थ, द गर्ल पुट द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स. So with this, we are done with the fill in the blanks, children. I hope that you have done this. It is a very nice, simple, yet very interesting poetry. Now we have question and answers, so you have to do this on your own. Like, who is the girl's favorite person? Her mother is the most favorite person. I am so anxious to keep it all neat means she is very eager to keep the letter neat and clean so that it is easy to read. And what should be mentioned clearly later? The address should be mentioned clearly in the letter. How many kisses does the poet gives her mother? Almost 10. And then the envelope is ready. This means the letter is ready to go. All right. So I hope, children, that you would be able to do these answers on your own. Just read the poetry once again carefully, and I am sure you would be able to solve all the answers. So with this, we finish with today's exercises. I hope that you have understood this lovely poetry and you enjoyed reading it. So with this, we come to an end to today's session. I will meet you again soon with a new chapter where we would learn something more creative and interesting. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, bye bye and take care. Have a wonderful day ahead.